Friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to all of you for this exciting program today in the evening. The program is on Rational Emotive Behavior Therapy, which is abbreviation is very popular. That's what is called REBT. Now, I won't talk about REBT much, but essentially it talks about that it enables you to discover yourself. It enables you to find out your own weaknesses. It enables you to find out, discover your positive energies and develop a positive outlook. That's essentially the entire idea of REBT. It's a very, very popular theory. And to talk on this particular theory, we have with us our own, she's pretty well known amongst all of us, and everybody knows her, Amruta Lovekar. Those of you who do not know a little bit about her, Amruta Lovekar is a very famous and renowned gerontologist in the city of Bombay. She is also the project manager of a Graceful Living, and the Graceful Living is a joint venture of the Just Look Hospital and the Tulsi Trust, and does a lot of work for the senior citizens. And Amruta does a lot of work for us. She does a lot of work for the senior citizen, and she's very, very known in the circle of the senior citizens in the city of the Bombay. So we once again thank Amruta that she's been kind enough to be with us today. Amruta, the floor is open. Please. Okay, so can I share my presentation? Yeah, you're a co-host. You can share. Okay, so I'll speak in Sir Hindi as well as English, dono combined as before. Yeah, you can hear me properly. Are you able to? I can hear you properly. Yeah, so I'll speak in English and Hindi both. Is that correct? Yes. Okay. Okay. So, and you're also able to see the screen? Yeah, we're able to see the screen. Okay. So, thank you very much, Dr. Sengupta, for calling me here. It has always been a pleasure talking to you all, because you have always, encouraged new topics. Or Hamesha, I have felt that, My Retired Life members, foundation members are very curious and, respond very well, if you take new topics, before them. So, with this in mind, I was always very attracted to, rational emotive behavior therapy. And also I wanted to know कि उसको हम लोग aging को कैसे apply कर सकते हैं. Okay, aging के लिए whatever problems we go through, उसको कैसे हम लोग deal कर सकते हैं, and how we can utilize the concepts that are there to aging. तो इसके लिए फिर वो मैंने पढ़ना शुरू किया, and then I actually came across a book which we then ordered. Tulsi Trust very kindly ordered the book from the US, and then I started studying that book, and I felt that there is just so much of information that could be shared with everyone. तो वही मैं share करने की आज कोशिश करने वाली हूँ. And एक बात ये है कि ये topic बहुत vast है. Okay, so the person who founded this therapy, so उन्होंने करीब 80 books he wrote, and around 1200 articles he wrote on rational emotive behavior therapy. तो इसके लिए एक घंटे में इतना सब cover करना is going to be difficult. So what I am going to do is to give you an overview of this therapy, क्या क्या ये बोलती है, and maybe we can have a discussion regarding how it can be applied to aging issues. Okay, so now we'll head straight to the presentation. तो ये जो है, it is a type of therapy which was introduced by Albert Ellis in the 1950s. तो ये एक ऐसी therapy है, something to help people in order to deal with emotional and behavioral problems. Okay, तो ये therapy action oriented therapy है, and how we can think more realistically in order to deal with our issues, whatever it may be, not just aging issues, but even other issues, relationship issues है, financial issues है, तो वो सबके साथ deal करने के लिए REBT has been extremely helpful. So it is a philosophy of life which is aimed at facilitating psychological health, resilience, happiness, and meaning in life.
ओके, सो इट हेल्प्स अस टू रीगेन आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ. अगर हमको लगता है कि हम लोग बहुत एंशियस हैं, इफ वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ वी वांट टू बिकम मोर mentally strong, we also talked about logotherapy last time, and how we can be more happy and gain meaning in life. Okay, तो ये सब, this is the goal of REBT. Okay, तो इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. तो ये जब भी एल्बर्ट एलिस ने, आपने नाम सुना होगा एल्बर्ट एलिस का. हैव यू हर्ड ऑफ आरईबीटी एंड हैव यू हर्ड ऑफ एल्बर्ट एलिस? आई वाज जस्ट आई वाज क्यूरियस टू नो. या, No, very few people. ओके, वेरी फ्यू पीपल. ओके, तो ये साइकोलॉजिकल जो मतलब ये जो सर्कल है उसमें काफी वेल नोन है. जनरली बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, इसका उपयोग करते हैं जब भी वो काउंसलिंग करते हैं. तो ये जो है एल्बर्ट एलिस, मतलब बहुत बड़ा नाम है, वेरी इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट. ओके, और अभी भी मतलब ही पास्ट अवे इन 2007. तो उन्होंने जब भी 1950s में जब भी इसको मतलब डेवलप किया, तो तभी एट दैट टाइम, यू माइट बी नोइंग सिगमंड फ्रॉइड का आपने नाम सुना होगा. तो एट दैट टाइम साइको एनालिसिस वाज वेरी वेरी पॉपुलर, इट वाज वेरी वेरी वेल नोन, एंड इट वाज वेरी वेरी डोमिनेंट. So that was like the mainstream therapy which was there and everyone had taken to it. तो अगर आपने पढ़ा होगा या आपको मालूम होगा, तो साइको एनालिसिस में जनरली, ब्रॉडली मैं बोल रही हूँ कि क्या होता है कि जनरली एक आदमी को, मतलब समझो उसके हिडन या अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या है, इसके ऊपर अ पर्सन इज एनकरेज टू टॉक अबाउट इट. दूसरा ये है कि भाई ड्रीम्स उसको आते हैं, तो फिर वो ड्रीम्स को एनालाइज किया जाता है. तो कोई भी अगर समझो बिहेवियरल इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ड्रीम्स का हेल्प लेते हैं. दूसरा ये है कि अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या है उसके बारे में वो आदमी को बातचीत करने के लिए एनकरेज करते हैं. और तीसरा जो है कि चाइल्डहुड इवेंट्स अगर कोई होंगे, उसका इम्पैक्ट अभी के जीवन पे कैसे पड़ता है, तो बहुत ही डिटेल्ड में वो एनालिसिस होता है. तो वो टाइम पे ये जो साइको एनालिसिस था, तो ये बहुत पॉपुलर था. तो उसमें मतलब जो अनकॉन्शियस, जो पहले के सब डिजायर्स हैं, उसके बारे में पीपल वेर एनकरेज टू टॉक अबाउट इट. तो एल्बर्ट एलिस ने, ही टोटली डिफर्ड फ्रॉम दीज मेन स्ट्रीम थेरेपी विच वॉज साइको एनालिसिस एट दैट टाइम, एंड ही प्लेस्ड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस. उन्होंने ऐसे कहा कि हाउ अ पर्सन थिंक्स, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम लोग, हमारे बिलीव्स क्या है, हाउ वी थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ओके, ही ऑल्सो स्टडीड अ लॉट ऑफ फिलोसफी. मतलब साइकोलॉजी तो उन्होंने, क्लिनिकल साइकोलॉजी तो उन्होंने पढ़ा ही था, बट उनके ऊपर मतलब फिलोसफी का भी बहुत उनके ऊपर मतलब ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. तो इन्होंने, ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपने शायद स्टोइक्स करके आपने सुना होगा, दैट इज अ स्टोइकल फिलोसफी करके हम लोग कहते हैं. तो ये जो है ग्रीक फिलोसफर्स हैं. तो द स्टोइक फिलोसफी टॉक्स अबाउट कि हम लोग मतलब मेंटली कैसे स्ट्रांग हो, इमोशनल रेजिलियंस हमारे में कैसे पैदा हो सकता है. तो एल्बर्ट एलिस ने ये सब फिलोसफीज को स्टडी किया, and that led him to believe that it is people's own ideas and beliefs as opposed to external events that cause emotional and behavioral disturbances. Okay, so my ideas and my beliefs related to an external event causes emotional and behavioral disturbances. ओके, तो ये थोड़ा हम लोग आगे इसके बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, और इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल्स भी लेने की कोशिश करेंगे. तो ही वॉज एक्चुअली वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय एपिक्टेटिस. ओके, तो ये ग्रीक फिलोसोफर थे, वेरी वेल नोन ग्रीक फिलोसोफर, हु वाज अ स्लेव. एक्चुअली ही वाज बोर्न एज अ स्लेव, बट उनके जो मास्टर्स थे उन्होंने उनको पढ़ने का फ्रीडम दिया, एंड देन ही बिकेम अ वेरी गुड, वेरी ग्रेट फिलोसोफर.
तो एपिक्टेटस का एक बहुत वेल नोन कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल आर नॉट डिस्टर्ब बाय थिंग्स बट बाय द व्यू दे टेक ऑफ देम. So it is not actually the event which happens, but my belief and what I think about that event which will influence कि मैं वो event कैसे देखती हूँ और कैसे मैं action लेती हूँ. दूसरा जो है, एलिस वाज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन. अगर आपने नाम सुना होगा, जॉन मिल्टन जो है वो शेक्सपियर के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड पोएट रहे हैं. तो मिल्टन ने ये कहा है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन. ओके, तो इसके लिए माइंड के ऊपर हम लोग कैसे कोई भी इवेंट के बारे में हम लोग सोच विचार कैसे करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ये दोनों का, मिल्टन का और दूसरा एपिक्टेटस के फिलॉसफी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एल्बर्ट एलिस पे रहा. अभी जो है, now we will come straight to the what does this REBT मीन और उसका सेंट्रल प्रेमाइस क्या है. और ये हम लोग जब भी बातचीत करेंगे तभी मतलब आपको at the end of the discussion you will also know why it is called the rational emotive behavior therapy. Okay, तो let us go to the central premise. ये philosophy, ये जो थेरेपी है वो क्या बोलती है. ओके, तो ये जो हम लोग जो कह रहे हैं, हमारे जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, बिहेवियरल अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसा हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं और उसके साथ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं. तो दे कॉल इट द ABC मॉडल. REBT में इसको ABC मॉडल ऐसा कहते हैं. तो सबसे पहले आता है A स्टैंड्स फॉर द एक्टिवेटिंग इवेंट. B स्टैंड्स फॉर द बिलीफ. हमारे जो बिलीफ, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे बिलीफ्स एंड आइडियाज. तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस. बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ्स एंड बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज हमारे दिमाग में या फिर हमारे में कौन से प्रकार के फीलिंग्स आते हैं और हम लोग कैसे एक्शन लेते हैं. So, as I said, 3 guiding principles or the central premise of REBT. Something in the environment which triggers a negative response. दूसरा, beliefs about the triggering event. तीसरा है, it stands for the consequences. Okay, so what are my feelings and what I do in response to the activating event. अभी अगर समझो हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो समझो हमारे कल्चर में हम लोग काफी ये करते हैं कि हमको वी डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड. सभी कल्चर्स में ये हम लोग सोचते हैं. तो इसमें अगर समझो आई हैव द बिलीफ, इफ सपोज मुझे बहुत रिंकल्स आते हैं. ओके, रिंकल्स हम लोग जो कहते हैं ऑन माई फेस, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स इन माई बॉडी ऑल्सो, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स, so that triggers a negative response. I feel that I am very disturbed by these wrinkles which are there. Okay, and my belief about the triggering event is that I should not have wrinkles. What is my belief? That I should not have wrinkles. I should not. If I have wrinkles, that means that I am going to look very, very old, and I don't want that. That is my belief. That is the idea that I don't want to have. I must not have, I should not have wrinkles. और उसके वजह से I feel very panicky, और मैं समझो कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ या फिर कोई बोटॉक्स ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ, तो my feelings are that I feel extremely depressed. I feel totally hopeless कि भाई अभी मैं वृद्ध होने जा रही हूँ and this is something that I cannot bear, and then I start taking anti-aging treatments. Okay, so और समझो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई समझो
मुझे अगर समझो किसी ने मुझे निग्लेक्ट किया, ओके, इफ आई से हेलो टू समवन, ये बहुत बार होता है कि इफ आई से हेलो टू समवन और अगर वो समझो आदमी ने मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आई एम गोइंग टू फील एक्सट्रीमली बैड, ओके, और मुझे लगेगा कि भाई एम आई नॉट सो गुड, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकती हूँ क्या, लोग मेरे से अच्छे से बातचीत करते ही नहीं है, देन आई एम गोइंग टू फील वेरी वेरी होपलेस, ओके. So in that case, what is my belief? My belief is that people should not ignore me. I should not be neglected by anyone. That is my belief. और ये अगर जब भी मैं belief मेरे दिमाग में आता है, then my feelings are that I feel hopeless, that I feel depressed, and it can also lead to an action where I might not move out, I might not go out, and I might stop interacting with people. ये काफी बार वृद्धों के साथ भी ऐसा होता है, हो सकता है. तो ये जो है, कोई भी निगेटिव इवेंट जो है, जैसे हम लोगों ने रिंकल्स देखा, या फिर अगर कोई मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, ये मैंने देखा, तो अगर मेरी बिलीफ रैशनल है, सो ही डिवाइडेड बिलीफ्स, या इज देयर समवन इज सेइंग समथिंग? सो ये जो बिलीफ है, ही categorized it into rational belief and irrational belief. Rational belief and irrational belief. If I have, and we will go into that, rational belief यानी क्या और irrational belief यानी क्या. Rational belief अगर मेरा होगा वो जो इवेंट हुआ इसके बारे में, तो I am going to have a healthy negative emotion. अगर मेरा बिलीफ irrational है, तो then I am going to have an unhealthy negative emotion. तो हम लोग इसको अभी समझेंगे कैसा, व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इरैशनल. तो इसके बारे में एल्बर्ट एलिस ने एक्सप्लेन किया है. एल्बर्ट एलिस ने कहा है कि रादर देन द एक्टिवेटिंग इवेंट, जो मुझे रिंकल्स हुए हैं, उससे ज्यादा मेरा जो बिलीफ है कि मुझे रिंकल्स होने ही नहीं चाहिए, आई कैन नॉट स्टैंड हैविंग रिंकल्स, because of which I feel very depressed, a lot of despair and hopeless. So my beliefs about that activating event in producing reactions and emotions and whatever actions I take, my belief is much more important than activating event. तो ये हम लोग समझने के लिए ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि देयर माइट बी वन पर्सन हु माइट से कि अगर मुझे रिंकल्स आए तो ठीक है, मुझे ये एज के साथ, दिस इज वन फिजिकल चेंज विच हैपेंस इन एजिंग, सो आई नीड टू एक्सेप्ट इट, दैट इज माय बिलीफ. अनदर पर्सन हु माइट नॉट हैव द सेम बिलीफ माइट से व्हाट इज दिस, मुझे रिंकल्स आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, आई कैनॉट गो आउट एंड आई कैनॉट अगर लोगों ने मेरे रिंकल्स देखे तो आई एम गोइंग टू फील टोटली शैटर्ड. सो इट इज दीज बिलीफ्स rather than the activating event which is more important in producing reactions and emotions. अभी रैशनल क्या है और इरैशनल क्या है, एंड ही हैज गिवन अ वेरी ब्यूटिफुल explanation regarding what are irrational beliefs. तो एल्बर्ट एलिस ने ये कहा है कि beliefs that hinder our pursuit of happiness and stop us from solving or adapting to practical problems are irrational beliefs.
जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको रीच करने के लिए whatever we want to do in life, whatever goals maybe we have set for ourselves in our life, if those beliefs are going to hinder my happiness and they are going to stop me from adapting or coping with that problem, then that is an irrational belief. On the contrary, that is an irrational belief. What are rational beliefs? Rational beliefs will allow us to accept the frustrating reality and adapt to it gracefully and make changes wherever possible rather than complaining about unkind fate. हम लोग ये काफी वृद्धत्व में देखते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ, ये डिजीज मुझे ही क्यों हुआ, why am I not maybe getting along with people, or why do I have such relationships. So rather than accepting the reality and maybe doing something about it, we go on thinking irrational beliefs, and we will definitely try and understand this a little bit more. एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि ये मतलब वन वेरी गुड एग्जाम्पल के कैसे रैशनल बिलीव्स हेल्प अस टू एक्सेप्ट द फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी एंड अडेप्ट टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आई माइट हैव गिवन इट टू यू एंड दे से इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. आपको ये मालूम होगा कि जॉन रोबलिंगटन करके जो हैं, तो ये एक बहुत बड़े इंजीनियर थे और उन्होंने करीब 1800s में उन्होंने ये जो ब्रुकलिन ब्रिज है तो वो बांधने का उन्होंने तय किया था. He also got the responsibility for building that bridge. But at that time, bridges were not very common. तो इसके लिए he did not get, मतलब support from everyone. Everyone started criticizing him. It was in 1800. I mean 18 मुझे लगता है कि करीब 69-70 की ये बात है when he was starting to build that bridge. Everyone criticized him. They said कि भाई you will not be able to build this bridge. This is a hopeless venture. ऐसा बहुत लोगों ने criticize भी किया, discourage भी किया. But he said that I will definitely go ahead with this. And he prepared a small team of engineers, which also included his own son called Washington Roblington. तो इन्होंने ब्रिज के ऊपर काम करने की शुरुआत की, and in 6 months time there was a huge accident which took place on that site, on that construction site. Now everyone thought that because of this accident this Brooklyn Bridge will not be built. This Washington, ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके वजह से जॉन रोबलिंगटन जो है he passed away. And this Washington Roblington जो है तो he was totally paralyzed from head to toe and he was not able to do anything. So he was extremely मतलब बहुत he was depressed, he felt very sad and a lot of despair, and he also felt that this dream that my father had of building the Brooklyn Bridge, I will not be able to complete it considering my present reality. But after some days, his wife was looking after him. After some days, he saw that what was he able to do? Although he was paralyzed from top to bottom, all that he could do was to move only one finger. He was able to move only one finger. There was nothing else that he could do. So he worked out a communication pattern with his wife. And
he asked the wife to call those engineers, that team, small team of engineers who were there, and through just moving just one finger, he was not able to talk, not able to communicate, but he showed his wife the plans, and through just moving one finger, he was constantly giving them instructions regarding how they could go ahead. And in around 13 years time, only by doing this, moving one finger, that Brooklyn Bridge was built in 13 years. Okay, so he just did not feel hopeless about it. Although he was depressed, but he got out of that phase and saw what he could do, how he could deal with that problem and adapted to it rather than just complaining about why did this happen to me. Okay, so as we said, irrational beliefs will stop us from being happy, stop us from solving or adapting to problems that we are going through, and rational beliefs will help us to accept the reality and adapt and cope with it and also overcome it to the best extent possible. अभी ये इरेशनल बिलीव्स, बिकॉज ये इरेशनल बिलीव्स काफी हमारे में होते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा पहले देखते हैं. उन्होंने ऐसे कहा कि देयर वी हैव सम इरेशनल बिलीव्स व्हिच आई थिंक वी कैन जस्ट टेक दिस वन. There are some irrational beliefs which we have, and these, yeah. So the first irrational belief which we have, he said, three or four, around 5 irrational beliefs which we have and which we first need to understand. If we want to move from irrational beliefs to rational beliefs, we first have to understand what is our irrational belief. The first is that I must perform well. और उनका ये कहना था कि ये जो irrational beliefs है उसमें ये must और should काफी आता है. I must be able to do this. I must be able to do things that I did in my earlier age. I must perform well. I must have a good relationship with others. So ये must जो है, ये should जो है, that he feels is an irrational belief, and that puts a lot of stress and pressure on us. The second belief which we have, irrational belief, you must, other people must treat me nicely and fairly. Although we like, if someone treats us nicely and fairly, we will like it. Everyone will like it. But to have this demand that everyone must treat me nicely and fairly creates again a lot of pressure and also a lot of disturbance in us. The third irrational belief is that the conditions around me, the environment in which I am living, family, wherever I'm staying, society, community, conditions, they must be nice and easy for me and not give me too many hassles. Okay, so this is a demand which I have, that conditions must be nice, they must be easy, and I should not have too many hassles in life. The fourth irrational belief, he said what he called as LFT, low frustration tolerance, or the not being able to stand any kind of discomfort.
okay, and not being able to stand something. If I say I cannot stand having wrinkles on my face, बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये I cannot stand dishonesty, I cannot stand this, I feel very irritated. So हमारा जो है, हमको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, आसपास में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ मेरे लिए इजी होना चाहिए, and I should not have too many hassles also. These are expectations which we have from life in general. So that is what he calls के भाई मुझे कुछ समझो illness आया. Okay, so what am I going to say? Okay, why did this happen to me? I cannot do these things. And I feel terribly upset. I feel depressed and I totally close down myself and I don't interact with others. Or maybe I will, whenever I'm interacting with others, I might feel a lot of anger and, unkind fate, as he said. So low frustration tolerance, and I cannot stand it. The other irrational belief, what he called as conditional self-acceptance. एल्बर्ट एलिस ऐसा कहते हैं कि समझो अगर ये अभी मैं सेशन ले रही हूँ, इसमें मेरे से समझो कोई गलती हो गई, ओके, तो ये गलती हो गई तो व्हाट एम आई गोइंग टू से, ओके गलती हो गई, आई एम गोइंग टू फील वेरी बैड अबाउट इट, एंड देन if I take it further, I might start thinking, अरे मैंने सेशंस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मेरी अभी ये गलती हो गई, I am not maybe able to capable of giving sessions. I might start thinking that way. So what happens is, maybe if something happens, something untoward happens, I generally define myself only in terms of one aspect. Tomorrow, if I go for an interview and I get rejected in that interview, what am I going to say? Okay, I am totally hopeless and I cannot do anything more. I am going to give up. So rather than seeing all the good things, all the positive things that I might have done before, I get so influenced and I see myself only in terms of one particular event which has happened, one particular negative event which has happened in my life. So that is conditional self-acceptance. मतलब हम लोग हमारे सेल्फ को एक ही एस्पेक्ट को देखकर हम लोग खुद को जज करते हैं. So he is saying that we have to see the whole personality, and we will come to that. So these are the irrational beliefs which are there. I must, I should perform well, I should, people should treat me nicely and fairly. If they do that, if they don't treat me nicely and fairly, I am again going to feel depressed, hopeless, and I'm going to feel a lot of despair. Conditions must be nice and easy for me and not give me too many hassles. Low frustration tolerance, as in I will not be able to face any discomfort in my life. And the fifth is that we define ourselves. If something untoward happens, if something adverse happens, I define myself only in terms of that particular event which has happened. So these are the irrational beliefs which are there. Are you able to understand till this point? Does it make sense? Yes. Okay. Now he says, ये अगर beliefs अगर irrational है, so what are the types of rational beliefs that we need to look at, that we need to aim for, that we need to develop in our lives? The first is that preference, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, that I must perform well. So if that can be a preference where I say that rather than demanding, I can say that it will be good if I perform well.
तो ये जो डिमांड्स हमारे हैं, ये शुड्स हमारे हैं, ये जो मस्ट, ये करना ही चाहिए, ये जो हम लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, तो ये विल enable us to create a lot of disturbance in our life. Another thing which he said was कि rational beliefs जब भी हम लोग बोलते हैं तभी ये एंटी ऑफुलाइजिंग, यानी अगर समझो कोई भी मेरा टॉक है वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो what am I going to say that this is totally awful, again I cannot stand it. Awful मतलब बहुत बुरा, this is awful, this is a crisis which has happened in my life and this is totally awful. तो अगर मेरे इसमें समझो कोई बुरी घटना घटती है तो मुझे लगता है कि एक तो मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इट और मैं इसको बिल्कुल फेस नहीं कर सकती. नथिंग इन दिस लाइफ कुड बी वर्स देन दिस. सो ही इज सेइंग दैट rather than saying that this is awful, I can say that although this is very bad which has happened in my life, I might feel extremely sad, bad, but I can see what I can do to cope with. तीसरा जो है, जो हम लोग लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बोल रहे थे, so he says what is more rational that we need to develop a high frustration tolerance जो हमारे इसमें काफी कम होता है. We generally tell ourselves that we cannot stand something. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे इसमें होते हैं, पानी कभी नहीं आता है, कोई भी समझो मशीन हमारा खराब हो जाता है. सो ऑल दीज इश्यूज टेक प्लेस एंड देन वी फील अरे ये सब व्हाई डू आई ओनली हैव टू गो थ्रू दिस and everything is coming at the same time, I cannot stand it. Okay, when he's saying that we tell ourselves that we cannot stand something, I cannot stand having this illness, I never thought about it and I never thought that I will have diabetes in my life. Okay, so when in fact what I'm saying is that we do not like it, we might dislike it, but ये कहना कि मैं पूरे तरीके से I will not be able to tolerate, I will not be able to stand this particular thing. What we can realistically say, if we really want to overcome or cope with that problem, अभी मुझे डायबिटीज हुआ है तो let me see what treatment I can take. If I constantly think about why did I get diabetes, I am not going to think about what action I can take to cope with that particular problem. And that is why he says that high frustration tolerance enables us to face difficulty with more courage and resilience. आपको ये याद होगा, एंड यू नो मे बी आई माइट हैव गिवन यू दिस एग्जांपल बिफोर. एक तो दो एग्जांपल्स मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं. एक तो ये जो है दैट लेडी हु वाज देयर, सुधा चंद्रन. So as you all know, she's a very popular actress, and she, I think in 1986 or 87, she had a big accident and she lost her leg. And she said that she was so मतलब उनको इतना, she felt so depressed, she felt so hopeless, and she said that I do not want to live any longer. कि मेरा अभी एक पैर गया था उनका वो एक्सीडेंट में. And she said that I want to end my life. तो उन्होंने, she was about to do that, and because she loved her parents too much and she felt that what my parents are going to feel, what will come upon them, and that is why she stopped she stopped her this of committing suicide. And उन्होंने फिर वो बाद में she said that because of them I wanted to live, and then I started to see what I can do to cope with this situation. And then she went on to मतलब वो जयपुर फुट वगैरह ये उन्होंने ये किया. Then again she started dancing, and then now she's a very well known actress. तो ये जो है, ये हम लोग छोटी छोटी बातों पे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. छोटी छोटी बातों पे भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों पे भी कुछ समझो इलनेस वगैरह आया उसमें भी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. So he is saying that we have to, if we want to
लिव ऑप्टिमली, अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम को अगर समझो फेस करना है तो वी हैव टू बिल्ड द हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. This is the book that I was talking about. Can you see? It is called Optimal Aging. Okay, I'll again show it to you at the end. Okay, so he says that we will have to build this high frustration tolerance. How do we do it? इसके बारे में भी उन्होंने कैसे हम वो कर सकते हैं. He has told us how to do it. The other this he says that type of rational belief is that unconditional self-acceptance is very very important. And generally हम लोग जब भी सोचते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि अरे ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, एंड देन वी फील दैट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, एंड देन आई एम नॉट capable of doing this. So generally we label ourselves. So Albert Ellis is telling us that we are far too complex to be rated in one aspect or dimension. In fact, it is impossible to truly define a human being in any one way. एक ही चीज अगर समझो मेरे से गलत हो गई, इसका मतलब मैं पूरे तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग मैं फेलियर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो वी आर बेटर ऑफ at rating our behavior, that particular behavior, and not our total self or not our total personality. Okay, so he's saying that these are the rational beliefs that we need to have. Preference rather than having these shoulds, must. Okay, so preference. I feel that okay, people should, people even if they don't, I will like it if suppose this session goes well. Second is that अगर समझो कोई भी चीज हमारे इसमें होती है तो I feel if it, rather than saying that it is totally awful, I can say okay, now this has happened, I am feeling bad, but I can definitely try and see how I can overcome this situation. The third is that we need to build this high frustration ability to deal in a resilient manner. अगर हम लोग फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे तो उसके आगे कैसे जाएंगे? So that is why frustration tolerance is very very important. And as I also must have given you this example of Stephen Hawking, who got this Lou Gehrig's disease. So ye to he was totally paralyzed at the bottom. So in this Lou Gehrig's disease, he was not able to talk, he was not able to walk, he was not able to communicate properly. Only thing he was able to do was he was able to type on a computer. Whatever his thoughts, he was able to type on a computer. And this man, I think in 2007, he is no more. Stephen Hawking wrote a very very popular book called Brief History of Time. तो इन्होंने ये होने के बावजूद भी he said that I want to go into space and I want to conduct research out there. And in 2009, he was able to do that, with this condition. Okay, so हम लोग जनरली थोड़ा या होता है या फिर बहुत कुछ होता है, फिर भी हम लोग पूरे तरीके से टूट जाते हैं. So this theory, this therapy which is there, this philosophy, REBT, helps us to regain the strength and the courage to deal with situations and accept ourselves as we are and not judge ourselves because of one particular thing which has one or two or three particular things which have happened negatively in my life. One of the things which he says that what do I do? How do I go from irrational to rational? What should I do? और इसके लिए उन्होंने एक बहुत important tool दिया है which is called disputing. हम लोग जो irrational beliefs हमारे दिमाग में हैं, उनको हम लोग अगर dispute करते हैं, then we will be able to move on from irrational to rational.
Okay, so how do I do that? So there are these series of questions which are there, and there are a lot of questions which have been given, but I have chosen these particular questions which he has mentioned in the book. So he says that this disputing is one of the primary ways in which we will be able to transform our irrational beliefs to rational beliefs. The first question that we need to ask is that having wrinkles is totally bad. This belief which is there, is it going to help me over the long run to believe this? ये wrinkles होना, अगर मुझे अच्छे से अगर रहना है, मुझे अगर अच्छे से, if I want to age gracefully and well, is it going to help me being so negative about wrinkles? That is the first thing. So इसके लिए ये रिफ्लेक्शन करना अबाउट माय ओन बिलीफ्स, जो जनरली हमारे कल्चर में इतना एनकरेज नहीं होता है. हम लोग जो दूसरे लोग बोलते हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं. हम लोग ये समझते हैं, हम लोग जो वृद्धत्व के बारे में काफी जो नेगेटिव आइडियाज हैं विच आर देयर करंटली प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, वही हम लोग मानते हैं. हम लोगों को सीखना नहीं चाहिए, हम लोगों को समझो ज्यादा तैयार नहीं होना चाहिए, हम लोगों को समझो ज्यादा यंगर जनरेशन के साथ ज्यादा मिंगल नहीं करना चाहिए. अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो अरे काम लोग क्या बोलेंगे. All these things, there are some people who might not believe it, there are some people in your group also who might not believe it, but I am saying that overall if we go to see, these things about aging are still prevalent. If this would not have been prevalent, all these anti-aging industry would not have grown so much. So does it help me over the long run to believe this? Okay, so having this wrinkles in the long run, if I'm going to be so negative about it, is that going to help me? दूसरी चीज ये है कि अगर मेरे को wrinkles होते हैं तो ये कहाँ पे लिखा है? Where is the evidence to support the truth of my irrational belief? मुझे wrinkles होने ही नहीं चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है? Where is the evidence to support the truth of my irrational belief? Okay, that I should not learn at a particular age, or that I should not have. अगर हम लोग कहते हैं कि ये भाई मुझे डिजीज होना ही नहीं चाहिए, तो ये होना ही नहीं चाहिए अगर हम लोग ये कहते हैं, तो वेयर इज द एविडेंस? मुझे क्या होना चाहिए और पूरे तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से मेरे हाथ में नहीं है, नॉट 100%. So where is the evidence to support the truth of my irrational belief? मुझे wrinkles होने ही नहीं चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है? अगर होते हैं तो मुझे उसके साथ डील करना पड़ेगा. The third thing, is my belief consistent with the facts? ये क्या मैं अकेली हूँ कि जिसको wrinkles होते हैं? बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको wrinkles होते हैं और वो अच्छी तरह से उसके साथ जीते हैं. Okay, so the fact is that in old age we will have wrinkles. Okay, so this is the way in which we can challenge the irrational beliefs which are there. Is my belief logical? Does it follow from my preferences, or I must not have this disease? I must not have wrinkles. I must be treated well by other people. ये कहाँ पे लिखा है कि हमेशा हम लोगों को लोगों ने अच्छा ही ट्रीट करना चाहिए? ये अगर हम लोग देखते हैं, यू आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, ये नहीं होता है लाइफ में. I might not be treated well by other people, but holding on to that and constantly having that grudge and that demand is going to affect me only negatively in the long run. अगर समझो कुछ untoward होता है तो then the other this that I can ask is this really so awful? अगर समझो कोई चीज, अगर if I'm planning a holiday or something and if maybe I don't get the tickets of my choice, or if I don't get to go to the destination of my choice, is it really that awful? Is it really so important that I get to go to that destination? Can I really not stand it?
So these are the important questions. Can I not, I mean, if Stephen Hawking would have said that I cannot stand having this disease, would he have been able to cope with that particular problem? Anyone, we would have said that in maybe in that situation. But maybe if he would have said it, then he would not have done this kind of path breaking research which he did. So disputing हमारी thought process क्या है, सच में क्या हम लोगों को किस प्रकार के beliefs मेरे को जीवन में हेल्प करते हैं इन द लॉन्ग रन. तो जब भी हम लोग ये रैशनल कहते हैं, रैशनल डेफिनेटली मीन्स के मेरे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं क्या. If I am going to be so negative about wrinkles, is that going to help me in the long run? Okay, so this is the way I can dispute these irrational beliefs. So disputing is one major way in which I can challenge these irrational beliefs that are there in my life. 3 important REBT insights which are there, which Albert Ellis talked about. He said that how I think, including our rational and irrational beliefs, is the biggest factor in how I feel and act. How I think. And that is why they say that rather than when we are looking at aging, one of the most important things, rather than my genes and the environment in which I am living currently, that is why they say that the way I look at my own aging, the way I look at my attitude towards aging is what is the most important thing. And that is going to enable me to age optimally or to age successfully. That is why they are saying that this thought process is what is important. Second insight that he had was that that Albert Ellis talked about was that no matter, हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे पहले से ये आदत है, मेरी आदतें या फिर जो मेरे beliefs हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. So he is saying that rather than whatever has happened in the past, whatever is happening to me currently, I am responsible for my current beliefs, not the adverse event. Okay, another example that I will give you कि कैसे हम लोग ये beliefs हमारे irrational हो सकते हैं. Even about money, if I feel that okay, I have less money, which is a fact. Okay, so that is the adverse event. मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, not as much that I would have wanted. तो फिर मैं क्या ये होती हूँ कि बाबा, I will feel extremely sad. I will feel that I will not be able to interact with my friends. I might not go for outings. I might not go for other small events which are there. So Albert Ellis is telling us that not having enough money is not what is causing disturbance in my life. My belief that I should have enough money is what is causing this disturbance. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं. हम लोग देख रहे हैं कि स्लम्स में भी लोग जीते हैं, बहुत कम पैसा होने के बावजूद भी लोग बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं. तो ये जो मेरी डिमांड है कि मेरे पास ये होना ही चाहिए, कुछ भी हो, आई कैन नॉट टॉलरेट, ये कहीं न कहीं I would like to have more money, but even if I don't have more money, कैसे मैं ये कर सकती हूँ, ये अगर मैं ये कॉन्स्टेंटली सोचूंगी कि शुड आई मस्ट हैव, ये क्यों नहीं मैंने किया, मैंने क्यों ज्यादा पैसे नहीं कमाए, क्यों ज्यादा पैसे नहीं कमाए, ये अगर मैं कॉन्स्टेंटली सोचते बैठती हूँ, तो अभी मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ, या अभी मैं कोई सेंसिबल इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ क्या, वो भी मैं अभी नहीं कर सकती.
the other insight that he had, that through work and practice, constantly, if we are going to work, practice, translating our irrational beliefs to rational beliefs, we will be able to change how we think, feel, and act. There are certain self-help forms also which are given. So ये भी I can give it to Dr. Sengupta, और अगर बाद में चाहिए तो आप वो ले सकते हैं. So it requires disputing our beliefs, and then अगर हम लोग ये dispute करते हैं तो हमारे beliefs जो है वो rational और effective हो सकते हैं. But we have to dispute them. So generally, either people do it themselves through reading and understanding this philosophy and therapy, or maybe there are REBT therapists who help you to do that. Another thing which happens in old age, कि ये काफी self pity होती है, कि भाई समझो कोमॉर्बिडिटीज हैं, बहुत सारे illnesses हैं. So that also stems from LFT, which is low frustration tolerance. ये नहीं होना चाहिए था मुझे, मैं ये नहीं कर सकती हूँ. और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जनरली वृद्धत्व में, ओल्ड एज में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग हमेशा फोकस करते हैं, रादर देन व्हाट आई कैन डू. ओके, और ये एग्जाम्पल बहुत यहाँ पे रेलिवेंट है. हिज नेम वाज एल्बर्ट श्वाइट्जर, और ये जो थे ये he was a very very well known pianist and very very well known social worker also from Germany. So he got Parkinson's disease, and we know that our hands tremble जब भी हमको वो disease होता है. तो his hands were used to tremble whenever you used to play the piano, and everyone thought that he will not be able to play the piano anymore. But Albert Schweitzer ने क्या किया? He did not stop playing the piano as people expected, but उन्होंने पियानो जब भी प्ले करते थे तभी ऐसे उन्होंने ट्यून्स ढूंढे which required his hands to tremble. So this is how we overcame the problems that arose from that disease. Okay, so it stems from low frustration tolerance. हम लोग टॉलरेट ही नहीं कर पाते. एंड जनरली ऐसा क्यों हुआ है, ये मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है, ये डिजीज मुझे ही क्यों हुआ है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ. तो ये जनरली सेल्फ पिटी जनरली वृद्धत्व में हम देखते हैं कि वो ज्यादा हो सकती है. इट स्टेम्स फ्रॉम मस्ट, कि ये मुझे नहीं होना चाहिए. तीसरा है बिकॉज ऑफ दैट वी विक्टिमाइज अवरसेल्व्स, दैट इतना बुरा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ है एंड आई कैनॉट, मैं ये बेयर नहीं कर सकती. और हम लोग ये कहते हैं कि वृद्धत्व में हम लोग नए से शुरुआत नहीं कर सकते हैं. आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट, आई जस्ट कैनॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू इवन दो आई माइट हैव द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस. अभी तो उम्र हो चुकी है, आई कैनॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. Another example is of this, Harbhajan Kaur, who at the age of 90, जिन्होंने अपने बेसन के बर्फी का बिजनेस उन्होंने चालू किया. Till the age of 90, this lady had never ever earned her own money. And when she was discussing it with her daughter, तो daughter ने उनको encourage किया, and उन्होंने एक चंडीगढ़ में उन्होंने एक गाला लिया, एंड वो गाला में उनकी ये जो बेसन की बर्फी है वो इतनी चली, एंड देन शी हैड टू बाय अ बिग शॉप, एंड हर बेसन की बर्फी बिकेम सो पॉपुलर दैट आनंद महिंद्रा, द वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने उनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया. द टाइटल ही गेव हर. So at the age of 90, this lady started all, मतलब totally new.
a totally new business. She was a homemaker. She was at home, never earned her own money, mostly never had set out of her own home much. And she started her own besan ki barfi ka business, which is still doing well till this date. So ये जो हमारे सेल्फ पिटी के अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं जो वृद्धत्व में हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा हो सकते हैं. Some common forms of self pity which are there. What I envy in others. ओके उन्होंने काफी, हम लोग देखते हैं कि काफी बार हम लोग सोचते हैं कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है. The other person, the other older adult who is there, the other older adults in my group who might be there, or in my society, or in my community, I might think अरे उनको कितना अच्छा social support है. तो ये जनरली हम लोग यही इसके बारे में सोचते रहते हैं, एंड दैट हमारी जो सेल्फ पिटी है वो काफी ज्यादा हो सकती है कि उनको देखो कितना अच्छी तरह से उनके बच्चे देखते हैं या उनको कितने अच्छे से सोशल सपोर्ट मिलता है, तो मुझे क्यों इतना नहीं मिल रहा है. सो दिस काइंड ऑफ जेलसी और एनवी माइट बी देयर इन ओल्ड एज. Another thing which is also a common form of self pity, what I used to be. मैं पहले ये कर सकता था, so even now I must be able to do it, rather than trying to find a way in which I can do that particular thing. When I used to work in a old age home for around 2.5 years. I worked there. तो constantly मैं ये पहले करती थी, मैं वो पहले करती थी, और अभी मैं नहीं कर सकती हूँ. और वो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. So what I used to be, I constantly compare myself to my achievements which I did in my earlier years, and now I feel helpless that I am not able to do that. What I should have done earlier, ऐसे मैंने करना चाहिए था, वैसे मैंने करना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया. So this sense of regret which is there, so that also is a form of self-pity, and that also creates a lot of disturbance. And that is why we say that even in old age, if we have a lot of time in our hands, the most important thing is that we need to reflect on our old age, and also, the kind of potential that I have, the kind of human being that I wanted to be, have I really become that human being that I wanted to be? Can I work on my own weaknesses and become a better human being? Okay, so what I should have done, what others should do for me, यहाँ पे तो बड़ा ये हो जाता है. आई एम टोटली नाउ, मुझे इतने सारे मतलब इन्फॉर्मिटीज हैं या इलनेसेस हैं, एंड पीपल शुड डू दिस. पीपल हैव टू टेक पिटी ऑन मी, और लोगों को पीपल हैव टू डिवोट देमसेल्व्स टू मी. My children, my wife, my husband have to devote themselves to me. Otherwise, life is not worth living. And then constantly going on grumbling, complaining, whining. What others should do for me, they should. So ये जो हमारे beliefs हैं, that stop us from being happy, and that stop us from leading the good life that we can do. The last, this is that how others should repay me for what I have done. और ये काफी वृद्धत्व में हम लोग देखते हैं कि भाई मैंने इतना सब लोगों के लिए किया, पर ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते. which is okay, which is, but people, मैंने इतना किया, but people should repay me. They should repay me for whatever I have done for them. Again, if they do it, that is good. If they don't do it, having this kind of grudge, having this kind of must, having this kind of demand, ये मेरे खुद के लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक है.
और ये मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बोला होगा कि मैं जब भी यूके में गई थी पढ़ाई करने के लिए, तभी मैंने ये देखा था कि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, तो वो जनरली अपने बच्चों के साथ, अगर उनके बच्चे रहना चाहते हैं तो भी नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू हैव दिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ये सभी को होना चाहिए, आई एम नॉट एनकरेजिंग दैट, बट ये हमारे में जो ये कॉन्स्टेंटली हमारे इसमें जो कंप्लेन रहती है कि भाई वो ये करता नहीं है, वो करता नहीं है। मैं जो भी ओल्ड एज होम में काम करती थी तो बहुत सारे लोग ऐसा ये करते, अरे 5 साल पहले उसने, मेरे रिलेटिव ने मुझे ये कहा था। अगर बच्चे हमारा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर समझो नहीं करते हैं तो क्या करें। तो इसके बारे में ये कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करना इज नॉट गोइंग टू गेट अस एनीवेयर, एंड ऑल द मोर हमारे में और हमारे बच्चों में जो दरी है, जो डिस्टेंस है, वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बुरा तो लगता है, दैट इज नेचुरल, बट उसके आगे कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हमको REBT करने के लिए मदद करती है। तो ये क्विकली आई विल जस्ट गो थ्रू दीज, he has given some practical tips so which are there कि how we should age optimally. तो जब भी हम लोग ये, he says that first of all face reality. ओल्ड एज में हम लोग देखते हैं कि देर आर एडवांटेजेस विच आर देयर एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो विच आर देयर। तो हम लोग जनरली ये डिसएडवांटेजेस पे ही बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, एडवांटेजेस पे हम लोग जनरली फोकस नहीं करते हैं। टाइम जो आपको ज्यादा मिलता है, जनरली रिसर्च सेज दैट वृद्धत्व में दोनों साइड्स ऑफ द ब्रेन जनरली वृद्ध लोग जो है वो यूज करते हैं। दिस टाइम फॉर रिफ्लेक्शन दैट आई हैव गॉट, this time to experiment on different things, to learn different things, to have the time to learn different things. So it is important to face reality with the positive things that are there. The second thing is that I can create my own beliefs rather than having these irrational beliefs of must and should कि ये ऐसे होना ही चाहिए. So I can create my own beliefs. Whatever said and done, whatever the adverse event which is there, I have to accept responsibility for my own thoughts, actions and feelings. अगर समझो कोई आपत्ति भी आ जाती है, कैटेस्ट्रोफी भी आ जाती है, या फिर एक समझो डिजास्टर भी आ जाता है, हम लोग देखते हैं कि उसमें दो लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर समझो कोई बाढ़ आ जाती है तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि फ्लड अगर समझो कोई भी समझो जगह पे अगर हो जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति शायद क्या कर सकते हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, और एक व्यक्ति अगर बोल सकता है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो unless and until we accept responsibility for our own thoughts, actions and feelings, we will not be able to overcome that situation. Do it now. Okay, so if we have these irrational beliefs which are causing a lot of disturbance, then I will have to try and uh, do it now rather than blaming my past, rather than saying that okay मेरे habits ही ऐसे हैं, मैं नहीं change हो सकती हूँ. And we have talked about this before that at any age there is no age to say that people cannot change if they really want to. Okay, so I can't change my past, but these beliefs which I have about my disease, I can certainly have a relook at them. And when Albert Ellis is asking us to act like a scientist, he is asking us whether this particular belief which I have, is that helping me? And that is why he is asking us to act like a scientist. The other, this he says, is that work, practice, practice, practice. And he says that this is the biggest insight which I have, which he had. If I want to remember a particular thing, write about it.
If I want to gain expertise in a particular thing, उसको लिखिए. याद नहीं रहता है तो उसको रिपीट कीजिए, उसको लिखिए. कॉन्स्टेंटली मेरी मेमोरी कम हो गई है, उसके बारे में आप ऑब्सेस्ड मत हो जाइए. Okay, so acting on our rational beliefs consistently, that will enable us to have more rational than irrational beliefs. There is no gain without pain. Okay, तो first of all, मुझे मेरे बिलीफ्स रैशनल है कि नहीं. दूसरी बात, अगर डिस्कम्फर्ट है, उसके साथ डील करने के लिए या फिर वो फेस करने के लिए हमारा थोड़ा बहुत टॉलरेंस जो है वो हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा. The other, this is that unconditional self-acceptance. Okay, certain things I must have. I might regret. I might have done badly. But unless and until I accept myself unconditionally, rather than focusing on those things that I have done in a not so pleasant manner, this having this acceptance is going to help me in the long run. Live for now and the future. Generally हम लोग देखते हैं कि वृद्धत्व में generally this living for today is not there. अभी क्या करना है, अभी क्यों जीना है, what is there. But there are so many things, as we saw in the this of Harbhajan Singh, Harbhajan Kaur, her name is. The other, this very well known person, you know, who was a very well known marathon runner. तो जिन्होंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 मैराथन्स ही गॉट द यू नो, मतलब उन्होंने 6 मैराथन्स, वेरी लॉन्ग मैराथन्स ही रैन. फौजा सिंह करके, शायद आपने नाम सुना होगा, अभी एक उनके ऊपर पिक्चर भी आ रही है. तो फौजा सिंह स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 83. Okay, so he says that live for now and the future. At this age also, live for now and the future. Be interested in yourself and others also. बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि वृद्ध लोग सिर्फ खुद में ही ये होते हैं. यंगर जनरेशन के साथ अगर हमको अच्छा व्यवहार रखना है तो उनमें भी इंटरेस्ट दिखाइए, कुछ नया सीखने की. अगर उनको टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उनको अच्छी तरह से आती है, तो सीखने की कोशिश कीजिए. इंस्टाग्राम क्या है, ट्विटर क्या है. मैं अभी, मेरी बेटी है 8 साल की, तो मैं उससे सीखती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें नहीं आती हैं. तो आई लर्न इट फ्रॉम हर. So we have to be interested in others and what we can learn from them. अदर दिस, जो जनरली वृद्धत्व में ही होता है, एक ही तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कुछ भी चीज करने की. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू व्यूज, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. यूजिंग इट और लूजिंग इट. और ये फिजिकल हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ के लिए ऑल द मोर इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू बी. अगर हमको मेंटली, कॉग्निटिवली अगर हमको खुद को अगर फिट रखना है, तो वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स which will enable our brain to form new connections. If we do not do that, then these brain cells are going to die and we are going to go towards things like cognitive impairment and Alzheimer's. That is why doctors constantly tell us, use our mind, do some activities which are mentally challenging. The other, this is decline to decline. ओके, डिक्लाइन यानी मैं डिक्लाइन हो रही हूँ, ये मतलब तय कीजिए कि आई डोंट वांट टू डिक्लाइन. आई रिमेंबर इन वन ऑफ द मीटिंग्स व्हिच वी हैड, देयर इज वन 72 year old who had come, 72 73 years old, and he had said that at the age of 61 62 he had decided that I am determined. He was determined that I will not have any illness in life. And he said that fortunately till this time I have not had any. So this determination that which is there, that I don't want to decline. Even if I have a particular illness, I am going to focus on how I can overcome it and what things I can do in spite or despite all the problems that I might have because of that illness. Except that there is no guarantee.
If I want to take certain risk, if I want to have a second career, there is no guarantee that this is going to succeed. So no one has any guarantees. Okay, so I'm just going to end with this quote which is there. It says that the best years of your life, Albert Ellis has said, are the ones in which you decide that your problems are your own. You do not blame them on your mother, on your parents, or your environment, or the ecology, or the president. You realize that you control your own destiny, or at least the beliefs that you have about whatever events might take place in my life. And this is a very funny quote which Albert Ellis put forward. It says that if Martians ever find out how human beings think, they will kill themselves laughing. So he says that we most of the times we behave or we think so irrationally that people on Mars might laugh at human beings. Okay, so this is what I wanted to convey. So REBT basically हम लोगों को हमारे जो irrational हमारे जो beliefs हैं कि ये नहीं होना, वृद्धत्व में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे जो आइडियाज हैं इनको कहीं ना कहीं हमको चैलेंज करने की जरूरत है. And that will help us to age successfully and optimally. So if you have, thank you for listening patiently. If you have any thoughts, want to share something, you please feel free. Ask something, please feel free. Good evening, madam. Yes. I am R.K. Modi. See, generally, when we are retired from the service, so our thoughts came in mind. No, I am useless. Correct. I can't do anything. Correct. So, will it come in irrational belief? तो ये irrational belief जो है, तो I might feel कि बाबा now I don't have that kind of work, तो मेरा time ये होने में मुझे दिक्कत हो रही है to see how I can spend my entire day. So that belief, that feeling might be there, but how, whether I'm going to adapt to that particular situation and whether I'm going to have any kind of solution to that particular problem that I'm facing, that is the most important. If I continue to believe that, then that is an irrational belief. So retirement is definitely a very, very difficult adjustment. But if I have already planned that these are my particular interests and I am going to pursue my particular interest after retirement. One small example I'll give you. Recently, like a financial koi express mein ye, there was this person, just before getting retired at the age of, I think, 56, 57, this person was working in a bank and he was very interested in photography. So he was not able to pursue it in his earlier years. तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 साल पहले उन्होंने इंटेंसिव फोटोग्राफी का कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट ही हैड, मतलब ही स्टार्टेड, उन्होंने इतने अच्छे से वो किया बिकॉज ही वाज सो इंटरेस्टेड इन कि उन्होंने अलग अलग एग्जीबिशंस उन्होंने चालू किए and these exhibitions became so popular और सोशल मीडिया में इतने पॉपुलर हो गए कि ये आदमी जो अपने बैंकिंग करियर में कभी भी कोई अलग देश में गया ही नहीं था, आफ्टर रिटायरमेंट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो इन 6 countries in 7 years. It had come in the paper, Financial Express or something. तो ये है कि we need to plan also for our own retirement. And that is what we generally do pre-retirement programs, where we tell people that we need to plan. We need to think about these things beforehand. Yeah. Thank you, madam. Yeah. Madam, also, whatever you have taught, it is a very good thing, but we cannot remember all the things. But I have taken 2 points which I am following and I will follow. That forget past and live in present. The second, keep yourself engaged in old age.
Only two things I have taken out from that, because Understood. all things we cannot take. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yes, someone wanted to had raised their hand. I think Mr. Bhatt had raised his hand. Yeah, good evening, Amruta ji. Good evening, sir. Excellent session from you. And this rational belief, irrational belief is a new term for me, but you nicely explained. But one question is that, is the rational belief is same like positive attitude? Positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड तो मतलब सी पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी उसमें कोई निगेटिव फीलिंग्स के लिए जगह ही नहीं है एवरी टाइम समटाइम्स इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग पॉजिटिव आई जनरली टेल द अदर पर्सन अरे कुछ भी हुआ यू हैव टू बिलीव पॉजिटिव तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं कह रहे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर समझो कोई अनटूवर्ड इवेंट होता है तो आई माइट फील अगर मुझे something happens and I am going to feel, say suppose a close friend or someone dies, so I am definitely going to feel very sad, बहुत मुझे दुख होगा तो वो होने के बाद हम लोग उसके ऊपर कोई उसमें हम लोग टाई अप नहीं होने के बजाय हम लोग उसके ऊपर वो ओवरकम करते हैं या नहीं या उसमें कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं या नहीं ये हम लोग वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकले तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि अगर मुझे मतलब सच में अगर दिल से भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है तो जनरली पीपल टेल यू ओके ठीक नहीं लग रहा है अरे सिर्फ पॉजिटिवली बिहेव मतलब पॉजिटिवली थिंक करो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंक करना नहीं आता है यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड दिस इज व्हाट वी डोंट वांट टू डू we don't want to work on things we don't want to practice things we don't want to challenge things and it won't come automatically which is what generally ये positive thinking का जो ये है कि कुछ भी हुआ just think positively if it does not come from within you it won't last for a long time that's what they are saying yes I hope yeah I have a question, madam. yes sir Can I speak? yeah yes Many times people above 85, they try to start rejecting even they are our parents or near and dear relatives or friends. Suddenly say, I don't want to talk to you. And they get irritated again when you say, and even if we are not done any mistake and all for no reason, is it their reason of rejection, a part of their, they want to be aloof, or is it they are not having the capability or assessment of that situation because of the listening skill as yeah listening skills so hai also all these physical problems are there and you know okay. this along with that you know कि ये यहाँ पे जो मैंने आपको ये किया था कि there's a lot of regret which is there might be there and कि ये मैंने करना चाहिए था वो मैंने करना चाहिए था I have not done that and that basically हमारे attitude और हमारे behavior में आ सकता है दूसरी जो चीज है जिसको हम लोग एजिज्म कहते हैं कि देयर आर अ लॉट मेनी आइडियाज एंड बिलीव्स व्हिच आर देयर रिगार्डिंग हाउ ओल्डर एडल्ट शुड बिहेव ओके तो ये जनरली मुझे क्या अच्छा लगता है उसके बजाय बहुत सारे लोग मतलब खुद को एकदम अलिप्त कर लेते हैं बिकॉज दे फील अरे हाँ बिकॉज दे माइट फील कि अरे ज्यादा वृद्धत्व में बोलना नहीं चाहिए या फिर ज्यादा कुछ what about correct? What about saying, anger management? If they are arguing and not ready to accept the actual facts of life, not ready to take help, don't want to listen, don't want to accept. We should do, no? So this is what very we tough. should do. It is very tough. So you know, see this old age में ही ये नहीं. अगर मैं rigid हूँ, तो ये young age में भी हो सकता है. That I don't want to change. तो आदमी कुछ भी कर ले, young age में हो या फिर old age में हो, no one can make you do something. Okay, so ये वृद्धत्व में थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है and that is why we say that we have to work or I have to मतलब if I want to become like a मतलब मेरा aging अगर successful होना चाहिए तो being flexible, learning new things is something that I need to work on from the beginning. ये automatically 60 साल के बाद